या अगोदरच्या झालेल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच शुभम शेळके आणि त्याचा या ठिकाणी गौरव केला जातो विलियम्स सर यांच्याकडून. विलियम फर्नांडिस यांच्या शुभस्ते या ठिकाणी शुभमचा या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन गौरव केला जातो. वेल डन, वेल प्लेड शुभम. चलो मैदान पर, प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर अविनाश उर्फ डब्ल्यू और साथ साथ पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर. गेंदबाजी के मोर्चे पर संकेत. डेप्युटी सरपंच विलियम सर यांच्या शुभस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच दिला जातोय. पहली गेंद यहाँ पर वाइट के साथ रन संख्या को शुरुआत होती हुई गोवा पुलिस टीम की. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर. ओ ये बहुत बड़ी ऊपर बीमार गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल का और उसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक. 6 रनों का, कुल मिलेंगे 7 रन. और अगली गेंद मराठी में कहा जाए तो उघडा डोळे बघा नेट, पुढचा चेंडू फ्रेट. चलिए एक छक्का तो लग चुका है. फ्रीट यहां पर. ओ इस बार शायद चूके 1000 रुपए का इनाम था उनके लिए. और थोड़ा सा पहला छक्का लगने के बाद कलेजे में धड़कन बढ़ चुके हैं आनंद बद्री की. ओ ये गेंद निकले है कवर के दिशा में, गेंद का पीछा किया जा रहा है. गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए है. कहीं खुशी कहीं गम. मोहित खुश, आशीष के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी गम. आशीष लाइए, पानी लाइए हमारे लिए. अच्छी गेंद यहां पर खेल दिया, सिंगल जरूर. और निश्चित रूप से आशीष की टीम वो फुल टॉस गेंदे मिस कर बैठे और अच्छी गेंदबाजी. अभी अभी स्पेक्टर ने कैच पकड़ा है सीमा रेखा के बाहर. दिनेश सावत. ओ ये थोड़ी सी स्लो ओवर वन, थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले. बल्ला थोड़ा सा तिरछा हो गया, गेंद ऊपर से बल्ला नीचे से, बिंदी गेंद समाप्त होती. संकेत की अच्छी वापसी. पहली गेंद बीमार, उसके ऊपर छक्का. फ्रीट की गेंद के ऊपर ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन उसके बाद वाइड डाली हो, उसके ऊपर एक चौका, यानी कि उस एक ओवर में निकले 11 रन. ओ इस बार शानदार स्ट्रोक, कवर की दिशा में पीछा किया जा रहा है. गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल जो के आगे बढ़ता हुआ 15 रन. पहला मुकाबला आपने देखा वो 3 फुल टॉस मिस कर बैठे. अगर 3 फुल टॉस में एक आध दूसरा यहाँ पर छक्का लग जाता तो मैच शायद जीत जाती. और रिवर्स अटैक, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, गेंद निकली देखिए कहां से, डीप थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए.
के लिए देखिए जहां पर पानी है वहां पर गेंद पानी पानी हो गई। 6 रन और पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल जो कि पहुंचा है 21 पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अब देखता है गेंदबाजी के मोर्चे पर कृपेश पालकर। आता बाहेर असेल कॉमेंट्री मधी वेळ कसं मी तर कॉम्प्युटर करतोय ना हैसर काय अरे बाबा हे न्यू बॉल घेवपाचो हो सेकंड इनिंगचो बॉल ते तू न्यू बॉल चुसलो 2 ओव्हरी तितून खेळलो न्यू बॉल। अगर 2 ओवर में गेंद अगर गुम हो जाती है गिली हो जाती है तो नई गेंद दी जाएगी। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 21 रन। एक तगड़ी शुरुआत ताबड़तोड़ शुरुआत विस्फोटक शुरुआत देखने को मिली। एक छक्का एक चौका निकला पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से, एक छक्का निकला अविनाश उर्फ डब्ल्यू के बल्ले से। और गेंदबाजी के मोर्चे पर अंपायर का इशारा बॉलिंग पावर प्ले का हमारे ओर आता हुआ। 5 ओवर की पहली इनिंग रहेगी दोनों टीमों के लिए, 5-5 ओवर्स यहाँ पर। उसके बाद जो रन बनाए जाएंगे उसके ऊपर लीड और उसके बाद टारगेट सेट होगा दूसरी इनिंग में। सामना करेंगे पुनाजी कलंगुट का स्ट्राइक एंड पर। यह पावर प्ले का ओवर, 2 खिलाड़ी आप सिर्फ 30 यार्ड घेरे के बाहर रख सकते हैं। पटकी हुई गेंद इस बार निकले कवर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। 27 रन पर अब टोटल पहुंचा है। इस गेंद के पहली गेंद के ऊपर छक्का भेज दिया, थोड़े से आगे जो कि यहां पर निश्चित रूप से पटकी हुई गेंद इस बार मिड विकेट के दिशा में, गेंद लगभग निकल रही है, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। पहले ओवर में जिस तरह की शुरुआत उसी शुरुआत इस दूसरे ओवर की इन 2 गेंदों में। टोटल पहुंचा इस चौके के साथ 31 रन 31। एक शानदार शुरुआत विस्फोटक शुरुआत गोवा पुलिस को मिल चुकी है। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ इस बार शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी, लेकिन उसको चकमा देते हुए गेंद लगभग निकल रही है सीमा रेखा पर। सिंगल वहां पर निकलता हुआ, कोई रन नहीं था वहां पर, सिंगल निकला और सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पर। 32 विदाउट लॉस, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। पहले इनिंग में कम से कम रन देना चाहते हैं हर एक टीम, जब दूसरी 2 इनिंग की जब मुकाबला होता है, मैच होता है। फुल टॉस गेंद इस बार सीधा खेल दिया, खिलाड़ी थे ओ छलांग लगाई, गेंद को रोका, कैच था, हाफ चांस था, साथ साथ बाउंड्री भी रोकी। यहां पर 1 रन के ऊपर ही संतुष्टि, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 33 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जरूर जीता था ओम वॉरियर्स पाली टीम ने, लेकिन इस तरह की शुरुआत हो चुकी है सोचा नहीं था। ओ इस बार स्टीयर कर दिया, गेंद बल्ले को लगकर निकली गली की दिशा में। जब तक फील्ड की जाती 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 34 रन पर। 2 छक्के निकल चुके हैं यहाँ पर पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से। 5 छक्कों के लिए इनाम है 1000 रुपए का आनंद बद्री के ओर से। कृपेश पालकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे, इस बार अविनाश उर्फ डब्ल्यू। आगे निकले, ये भी गेंद जाइए, सिर्फ लेकर आइए आप, दर्शक की भूमिका निभानी पड़ेगी खिलाड़ियों को। और एक सिक्सर, दो ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में 21 रन निकले थे, इस दूसरे ओवर में 19 रन निकले। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 40 रन बगैर किसी नुकसान पर गोवा पुलिस पहले बल्लेबाजी करते हुए। टॉस जरूर जीता
लेकिन फील्डिंग करने का फैसला, गेंदबाजी खराब और बल्लेबाज के दायरे में गेंद डाल रहे हैं और बल्लेबाज उसे रडार से बाहर। जब जब स्लॉट में गेंद गिरते तब तब बल्लेबाज यहाँ पर प्लॉट में भेजता है। गेंदबाजी में बदलाव, पहला बदलाव गेंदबाजी के मोर्चे पर युवराज। कल अच्छी बल्लेबाजी करी थी इन्होंने, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा बल्लेबाजी का, खासा करके मैच जिताया था अपने टीम के लिए, आखिर तक रुके रहते हैं। लेकिन अब गेंदबाजी से करिश्मा दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये खतरनाक साझेदारी पहले विकेट के लिए अब तक 40 रनों के बन चुके हैं पहले 2 ओवर में। 3 ओवरों का खेल अभी भी पहले इनिंग का बाकी है। कितने रन बन पाएंगे, कितने रन पहले इनिंग में बन पाते हैं, इसके ऊपर दूसरी इनिंग का टारगेट सेट होगा। ओ इस बार उठाकर खेला है, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ कैच हाथ में आया था, आपने कैच छोड़ दिया, जमीन को दान कर दिया। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 41। इकतालीस रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। जीवनदान पुनाजी कलंगुटकर को। युवराज फिर एक बार और रिवर्स अटैम्प्ट, थर्ड मैन के ऊपर से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। टोटल अब पहुंचा 47, 47 रन स्कोर बोर्ड पर। दोनों तरफ से बल्लेबाजी जोर शोर से, छक्के चौकों के बरसात मैदान पर। फिर एक बार वही उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश, इस बार गेंद ऊपर उठी नहीं, सिंगल आसानी के साथ पूरा कर दिया दोनों ने। सिंगल के साथ साथ टोटल यहां पर 48 पर पहुंचा। तीसरा ओवर प्रगति पर, लगभग 16 का औसत है और हर गेंदबाज के ऊपर बड़ा तगड़ा शॉट। कल इस युवराज ने बल्लेबाजी से अपने टीम को मैच जिताया था, आज गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा उनकी टीम का। ये गेंद थोड़ी से चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 49 रन। पहला मुकाबला, कांटे का मुकाबला आपने देखा सेमीफाइनल का, ए स्ट्राइकर्स वर्सेस एम क्रिकेटर्स के बीच में। और रिवर्स अटैम्प्ट, देखिए खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जमीन को चूमते हुए निकले, थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर 4 रन के लिए। और इसी के साथ गोवा पुलिस के 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल पहुंचता हुआ 53 रन पर 53। रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पुनः जी एक तरफ से और साथ साथ अविनाश उनका भली भांति साथ देते हुए 53 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी थी, गेंद और बल्ले का जो संपर्क हुआ, प्ले डाउन हो गए, वहां पर आउट होकर पहले में वापस जा रहे पुनाजी कलंगुटकर। एक ठोस शुरुआत देकर वापस जा रहे 53 रनों की साझेदारी आखिरकार युवराज ने यहां पर समाप्त कर दी इस ओवर में। थैंक यू। 2 छक्के 2 चौके यहां पर देखने को मिले पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से। 28 रनों के एक शानदार साझेदार, 28 रनों के एक शानदार बारी यहां पर पुनाजी कलंगुटकर की आखिरकार समाप्त हुई इस ओवर में। और न्यू बैटर 1 डाउन के हैसियत से संजय नाइक मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, डीप में खिलाड़ी तैनात, मिड ऑन पर आकर गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में खुद का खाता खोला संजय ने। टोटल पहुंचा 3 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 54 रन, 54 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर।
हेलो, गेंदबाजी में और एक बदलाव गेंदबाजी के लिए आ चुके अब सर्वेश सामना करेंगे संजय, जो आते आते सिंगल के साथ अपना खाता खोल चुके हैं। 54 रन, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 18 के प्रति ओवर के औसत बरकरार रखते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड के साथ शुरुआत अपने इस ओवर की करते हुए टोटल पहुंचा 55, 55 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शायद जिस तरह से बल्लेबाजी मजबूत पक्ष है, गेंदबाजी भी अच्छे गोवा पुलिस के पास, और अब मात्र मजबूत नजर आ रही है सामने वाली टीम। और इस बार थोड़ा सा आगे थी गेंद, इसको खेल दिया, थ्रो देखिए कितना सटीक, लेकिन एक रन नहीं रोक पाए। एक रन के साथ टोटल पहुंचा अब तक 56, 56 पर एक विकेट गंवाने के बाद 28 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम दे दिया पुनः जी कलंगुटकर ने इस मैदान पर। इस सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप इस मैदान पर देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया हवा में, जरूर खिलाड़ी गौरेश थे वहां पर, सीधे उनके हाथों में था, मार बैठे, और जो कि शायद अंपायर के पास देखा था, शायद अंपायर के पास मांग कर रहे थे कमर के ऊपर की गेंद की, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा आ चुका है। जरूर दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ पर हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन जो कि जिस तरह से गेंद निकली है शायद ऐसा लग रहा है। आप देखिए, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं रिप्ले, और गेंद शायद आएगी अब इस तरह से। अब गेंद थोड़ी से बल्लेबाज के पास आते आते वो यहां पर गेंद जिस तरह से आ रही है देखिए, इट्स अ फेयर डिलीवरी, वापस जाना पड़ेगा अविनाश उर्फ डब्ल्यू को, दूसरे विकेट का पतन। एक फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा ताकत नहीं प्रदान कर पाए, सीधा यहां पर फील्डर को ढूंढ लिया, शानदार कैच गौरेश का देखने को मिला यहां पर। अब प्रारंभिक जोड़ी वापस जा चुके मैदान से बाहर, आराम फरमा रही है। 53 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुके थे। अविनाश डब्ल्यू भी आउट होकर पहले में वापस, अब न्यू बैटर मैदान पर, और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज प्रवीण राणे गोवा पुलिस के ओर से 2 विकेट के नुकसान पर। टोटल की बात की जाए तो 56 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट गंवाने के बाद चौथा ओवर प्रगति पर। ओ अच्छी गेंद, तेज रफ्तार वाली, पूरी तरह से खोल कर रख दिया बल्लेबाज को, चारों खाने चित, कहीं आता पता नहीं था, गेंद के लाइन में नहीं आए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर नजर आ रही इस ओवर में। फुल टॉस गेंद, लेकिन खेलना जहां चाहते थे वहां पर निकली नहीं, शायद और एक विकेट निकलता हुआ। प्रवीण राणे आउट होकर पहले में वापस, खाता खोलने से पहले वापस जाना पड़ रहा है, तीसरे विकेट का पतन। आजोबा क्रिकेटर्स और साई समर्थ दोनों टीमें कृपया आइए प्लीज। आजोबा क्रिकेटर्स और साई समर्थ,
न्यू बैटर जिन्हें सुपरमैन के नाम से जाना जाता है समर्थ गाउस मैदान पर। प्रवीण राणे जल्दी आउट हो चुके हैं। टोटल तो बन चुका है जिस तरह के चाहिए था, लगभग प्रति ओवर 10-15 रन का औसत चाहिए था, वो यहाँ पर बन चुका है। स्लोवर वन डिलीवरी, ये देखिए तेज भागे जरूर, लेकिन जब गेंद छोड़ी ना तो स्लोवर वन की। और सुपरमैन तो तेज गति की गेंदबाजी को पसंद करते हैं। थोड़े से चूके अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में। ओ ये सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ कवर पर जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ खुद का खाता खोला और टोटल यहां पर पहुंचा 57, 57 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। 22 रन बनाए अविनाश उर्फ डब्ल्यू ने। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 57 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट चटकाए सर्वेश ने। वापसी करी है लेकिन रन बने पहले 3 ओवर में, 57 रन। देखिए एक दोस्त हंस रहा है, लेकिन दूसरा दोस्त भी हंस रहा है, लेकिन मन ही मन में थोड़ा सा दुखी हो रहा है क्योंकि उनकी टीम हार चुकी है। शाम को जब एक स्पर्धा समाप्त हो जाए ना, दोनों दोस्त गले में हाथ डाल के घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक खुशी के मारे, एक गम के मारे। ओ ये अच्छी गेंद, यहाँ पर समर्थ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सिंगल जरूर निकलेगा। टोटल यहाँ पर पहुंचा 58 रन। गेंदबाज है गौरेश, और इन दोनों के बीच में और कौन होगा आपको पता है, वो हमेशा रहता है, उसका नाम है आनंद बद्री। संजू अगर लगातार 3 छक्के लगाता है तो 1000 रुपए आनंद बद्री की ओर से। और इस बार खोदकर निकाली हुई गेंद कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर कृपेश नजर आता हुआ। गेंद को जब तक फील्ड करता, थ्रो देखिए कितना सटीक, विकेट कीपर के हाथ से थोड़े से फंबलिंग वहां पर, और सिंगल को डबल में तब्दील यहाँ पर निश्चित रूप से। 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 60 पर। ये आखिरी ओवर है और पहले ही इनिंग में आपने इस तरह से रन बांटे हैं मानो खैरात में रन बांटे हो, मानो जिस तरह से गेंदबाजी पहले 3 ओवर में हुई खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओ इस बार देखिए घुटने के बल आए लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया। कृपेश पालकर का एक शानदार कैच, संजय नाइक आउट। आइए मैदान पर टोटल जरूर बताएंगे आपको। टोटल है 60 रन स्कोर बोर्ड पर और गेंदे बचे इस इनिंग की 3। सूर्या गांवकर, इन्होंने कल का एक मुकाबला शानदार बल्लेबाजी करी थी और इस साल गजब के फॉर्म में है। और क्रिकेट के लिए ये तो खिलाड़ी पागल है, क्रिकेट के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी भी टीम में खेल सकता है। रन बनाने की भूख है, विकेट चटकाने की भूख है। सूर्या गांवकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, फायर है, आग है इसमें। अब देखते हैं 3 गेंदों का खेल बाकी है और 60 रन कवरेज गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ फुल टॉस गेंद लेकिन ऊपर उठी नहीं, जमीन के सहारे खेल दिया स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल में से। जब तक फील्ड की जाती गेंद को एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 61 रन। पहले 3 ओवर में 54 रन बने थे, लेकिन उसके बाद वापसी करी है इस टीम ने इन 2 ओवर में। अब अगर बात की जाए पिछले 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए हैं। फुल टॉस गेंद समर्थ के लिए, मिड विकेट की दिशा में आती हुई गेंद
गेंद को जब तक फील्ड करते, संकेत थ्रो करते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल जो के आगे बढ़ता हुआ 62 रन। 62, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, पहले इनिंग की आखिरी गेंद। आजकल देखा जाए तो लोग शादी के बाद क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और सुपरमैन तो शादी के बाद ग्राउंड शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ओ ये सूर्य गांवकर गैप में से गेंद को भेजना चाह रहे थे, लेकिन थ्रो देखे कितना सटीक, और ये रन आउट मिलेगा मात्र सिंगल। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 62 रन, यानी कि 63 रन टोटल बन चुका है पहले इनिंग में। 5 ओवर का खेल समाप्त। अब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करेगी यहां पर पाली की टीम, तो उन्हें यहां पर ये 63 रनों का आंकड़ा पार करना है, लीड लेनी है और दूसरे इनिंग के लिए जाना है। क्या होगा, ले चलते हैं अगले 5 ओवरों के लिए। फिर एक बार आमंत्रित करते हैं हरीश काकोडकर सर को। धन्यवाद। आजोबा क्रिकेटर्स और साई समर्थ, आइए प्लीज। हो कॉल होता आजोबा क्रिकेटर्स. आजोबा क्रिकेटर्स तुमका हो कॉल येता, मातशे हांगा बेगीन रिपोर्ट करात. कॅप्टन मातसो प्लीज रिपोर्ट कर इमिजिएटली. आजोबा क्रिकेटर्साचो कॅप्टन मातसो कॉमेंट्री बॉक्सार रिपोर्ट कर.
So now, pretty good total being posted by this team. 63 has been scored in the first innings. And I guess Warriors need to get somewhere around 55, maybe 50 plus, or they have to take lead of at least 5 to 10 runs against Goa Police side. They need to be positive in their mindset, not to be afraid of the big names. If you can show your game just like how Yuvraj has shown throughout the entire tournament, I guess they can still come close to this total of 63 runs. So Apali Kalangudkar with the ball in his hand. Abhishek on strike, Yuvraj at non-strikers end, chasing 63 in the first innings. This time just play down for a single little fumble there, not thinking of the second. We witnessed a different games today. Just a low total in the first innings, 34 by AS strikers, but they bowled well and restricted the opposite team of EM cricketers, which was really strong, to just 36 in their first innings. Full toss ball, oh, could have been hit away. Well, requesting the keeper either to stand in front with a helmet or you stand behind. This time, this is nice shot, but fielder is there. The ball is taken. It looked as if he timed it well, but we have seen the ball does not go across that part of the ground. Wicket of the very first over. Abhishek goes back. So not a good start here for Om Warriors. Apali Kalangurkar strikes in his first over. And in comes the new batsman, Viraj. Another full toss ball here. They are not taking advantage of the full toss ball. Apali is missing his length here at the moment. This is the second full toss ball that he has bowled so far in the first 4 balls. The batsman just maybe thinking this is a new ball, might not fly across for 6s. Just gets a single Viraj here. 3 on the board so far for the loss of 1 wicket. This is nicely played. This is a very good shot. He has been the top player and he scores a top shot.
So little bit of time here because the ball maybe landing on the pendle directly. That's wonderful timing. If we see that the sixes are going to be difficult, but not here from the bat of Yuvraj. He has been really played like a prince of this team. That's the reason why they are into the semi-finals. He's a big hope for them. Pali bowled 2 full toss this time. It was not that too short, but he used the depth of the crease very nicely over there, Yuvraj. This was also a full toss ball. This is the third full toss, and all 3 full toss have been counted for just a single. So Pali, although he has taken a wicket, but still not be happy with the way he has bowled in this first over. It's 10 for 1 in 1. So now Sandesh Thakur will be bowling from left arm round the wicket with a lot of pace. Sandesh Thakur, a well renowned, highly decorated all-rounder of Goan tennis cricket. Up against Yuvraj. Goes for the switch. It might be a catch. No, just away from the field. He actually wanted to play in the point region. It went into the covers region, or you can say for a left-hander in the mid-wicket region. The single taking the score to 11 at the moment. 5 overs, that's just one way. You have to go for the bowlers, almost every bowler, and try get 12 runs per over. That should be the minds of the batters. Once again, right in the block hole, Sandesh Thakur. Well, he performs very well all the time, but more so in the semi-finals and finals. Well, I've seen semis and final, whatever extra effort is there, he just gives it a full throttle. Just like a valve is open for full throttle and the flow is full on from Sandesh Thakur. No short of commitment when it comes to big matches and big tournaments. Once again, this is really good bowling here. That's the reason I say he might have decreased a bit pace from the last few years, but he has become more consistent. He has got more variations and more maturity when it comes to experience that he has gained over the years. Team Azoba mache full team mache ya tanga commentary box on. Once again, this was full toss ball. That was whacked it. He just whacked it. No second thought from the batsman. Full toss ball. It was a freebie and it gets a free hit. This time he missed it. This was a slightly fuller length. Full toss that have been missed here have been taken to task. Score is 18. So Yuvraj is playing well. Yuvraj is playing and has been the most consistent batter in this tournament so far. It's a wide signal here. He left it all alone. And maybe a little thought from the keeper behind the wickets, but umpire is very much into the position. Umpire says it's my judgment to give it, not the keepers nor the short third man.
So let's carry on with the match. He says Sujit Rane and Raju Dabolkar officiating the second semi-finals. Once again going for the switch. This time is plumb in front of the wicket. Oh, that's a big wicket here. He played so well up till this point of time. He had the shots. He had lots of shots to play. Sandesh Thakur saw him going for the switch. It fired it on his legs and he was struck in front of the wicket. Second wicket going down, and this I feel is the biggest wicket for Goa Police at the moment. After completion of 2 is 19 for 2. But Yuvraj certainly has been noticed here by everyone. Yuvraj will certainly be invited as an icon player, invited as a batsman in many of the teams across. He has got the caliber, he has got the class. And I just got information that this same person, Yuvraj, has scored a century in Panpara Guzgaon in 5 hours tournament. So you can imagine a century by a player in tennis ball cricket. So one more rising star is coming up the ranks. And that's the reason why this tournament is organized. We want rising stars here from Sodium as well. Sodium and Sholim players should come up, should see how the cricket is played. The level of cricket, level of tennis ball cricket has increased by many a miles in the last 5 years. And that's why Mohit Chopdekar and his team of Sodium Stars has organized such a tournament just to get you a feel about how the cricket currently is held across Goa and outside Goa. This is the platform for you all when the worldwide tournaments are being organized, and this is the level that you have to reach to showcase your talent against the might of Goan tennis stars. Full toss ball, missed once again. We might have to wait. This is certainly a 2 runs. And a no ball signal here. Definitely a no ball, above waist no ball height, and it's going to be a free hit. Surya starting off badly here. Requesting the captain of Azoba and Sai Samarth. Azoba cricketers and Sai Samarth captain Matso Beginio Tosak. This time comes back strongly Surya. Just like I was talking about Yuvraj, the prince of Om Warriors, Pali, who is rising on the stars, and this guy has also made his name. The only player from Goa to go outside Goa and win the Player of the Series award, Suryakant Gaonkar. This is in the air, this should be catch. Surya says it's mine. Oh, he drops it. Keeper was also there, Surya was also there. And maybe Sun stopped Surya in taking that catch. This was a sun rays maybe directly falling. He was into the position all the time. Comfortable looking catch. Dropped here. Given a chance to the batter. Takes the score to 23. A long way behind at the moment. Om Warriors. But certainly they have put their name as Warriors. So Warriors always fight back. You need to fight back. You need to show the instinct. So no position whatsoever to play that shot. Very good to see Baba Malik is standing just close to the wickets against Surya. Surya has got decent pace. Also boasts with that variations. So you need to have good keepers. He's a regular keeper in leather ball cricket. Baba Malik. Lovely ball. Can get a single at the most. Takes the score to 24. You cannot be reeling way too far in this match. You have to get somewhere close. At least 50-55. Which should be the first target in the minds of Om Warriors. This is the 3rd over in progress, bowled by Surya at the moment. Full toss ball, they are missing the full toss ball, and full toss is giving the wicket here to Surya. Lucky here, the batter did not get off the meat, but it was collected cleanly right in the middle of his hands by Phunaji Kalangudkar. 24 for 3 in the 3rd over.
So left-hander, new batsman. Mohit. Mohit is looking at me. I am still here outside doing the organizing part. It's a left-handed Mohit from Om Warriors Pali. Surya getting a wicket here. This is in the air. This might be one more wicket. And yes, it's taken cleanly here by Praveen Rane. It was not easy. He had to judge it in the air. Goes back behind and takes it safely. So one more departs here and not looking good for Home Warriors. Goa Police have struck their fourth one. टीम आजोबा तुमका आता परत एकदा एक कॉल होता मातशे फोटवाक येयात टीम आजोबा सोडयेचे टीम आजोबा मातशे तुमकां रिक्वेस्ट आसा मातशे जातितले बेगीन फोटवाक हांगा येयात प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स फॉर दिस इव्हेंट अमानी इव्हेंट्स जे सगळे आयच्या दिसान जे गोंयचे खंयचे टुर्नामेंट आसा ते कवर करता प्रोफेशनली तुमकां इमिजिएटली ताजे फोटो आनी म्हाका दिसता सोशल मिडियाचेर जे अपडेट जातात फटाफट ते इतले प्रोफेशनल सद्या गोंयान कोणूच ना नंबर 1 रँक्ड सद्या इन गोवा अमानी इव्हेंट्स So here comes Sunny and he goes for 6 runs. Tried hard the fielder there, but finally they got a 6. Gaurish it is, Gaurish. Oh, this is a lovely shot here. And goes for the boundary. No chance for the fielder. He tried hard. Ball went in the other direction. So good start here from Gaurish. Gets the 6. Now gets the boundary with the switch hit. And Harshad Matodkar will be under pressure. .34. Oh, this is a biggie. This is a massive 6 here from the bat. This is the match changing over. Harshad Matonkar has been hit for 2-6 and a boundary in the first 3 balls. The score moves on to 40. 63 was posted by Goa Police in the first innings. This is looking better here. Gaurish is striking cleanly. He's making the surgical strike here against the bowler Harshad Matondkar at the moment. Striking it clean, striking it big. In comes the 4th ball. Sam just could not get, just gets a single down the ground. Gaurish will be on strike for most of the deliveries from here point. 41 the score. The score moves on to 41. Chasing 63 runs in the first innings. Oh, this is been swatted. Was taken. How did that stay inside? How did that ball stay inside? He had literally meted it. He had literally powered it. Maybe the ball staying more time in the air just lands it inside the field. Surprising for me, surprising for the batter. And there goes the 5th wicket.
41 still the score. One ball left in the fourth over. Harshad Matondkar very costly here. And in comes the new batter, Krupesh Palkar. How many times we must have seen this battle? They play as a professional players in big cricket tournaments. Oh, Krupesh missed that. Ball looped in and dipped in at the last moment. And that is the dot ball. So Krupesh, Harshad Matondkar comes back strongly in the last three balls. Concedes just a single in last three. But overall, 17 runs scored of his over. At the completion of 4 is 41 for 5. This time just going to, oh, that's a poor throw here. Still no runs taken. So good backing by Goa Police. Goa Police, certainly one of the strongest outfit. Not only here, but they take their teams outside Goa in a big tennis tournament, leather ball tournaments as well. Sometimes in Karnataka, sometimes in Maharashtra, or sometimes in Gujarat as well. Goa Police. This is a good shot. What a lovely shot this is. Here just... oh, there was a field. He has stopped it. I thought it might go for 6 runs. A little lack of power. He just timed it, Gaurish. Score moves on to 42. Just at the lack of power. Now Krupesh Palkar will be on strike. They are trailing long way back at the moment. Trailing by 21 runs. 63 is what Goa Police have managed to score. So trailing, they need to get it somewhere around 10. At least 10 maybe. So they keep a chance for themselves in the second innings. These matches are of 2 innings. Oh, that's a good ball right in the block hole. It's a quicker ball, not the leg spinner here from Tushar. He has been a very good inclusion in this side of Goa Police, Tushar. Request करता साई समर्थाचो कॅप्टन मातसो टॉसा कियो. साई समर्थाचो कॅप्टन मातसो टॉसा कियो. Once again, nothing short, just going to get a single, maybe trying a switch it here, Gaurish. Tushar has bowled exceedingly well, not only in this match, throughout the course of the tournament, hardly given any sixes. Although he is bowling the 5th over, but in a tournament like this, where the bowling power play has been chosen in the 5th over, here by the bowling captain, that over and that bowler becomes even more effective. That's why you have to preserve your good bowlers to be bowling in that bowling power play over. That's exactly what they have done. Goa Police. So it's just singles that are coming here. Singles won't hamper Goa Police chances in the first innings. Trailing by 18 at the moment. 45 on the board. Can Gaurish finish it off with a 6 here? At least they will get somewhere more than 50 runs. That is what Om Warriors will be hoping for. And gets a wide down the leg side. Fired it on his legs. Maybe thinking that he's going to go for the switch hit. That was the idea of the bowler, but the bowler was smart, stood his ground. Score moves on to 46. That's good over. That's really good over here. He has been absolutely on the mark in this over. Not given anything. Should be an easy run out. And there goes one more wicket here. 6th wicket down in the form of run out. But after completion of first innings of Om Warriors, they managed to get 47 runs on the board. That means they are trailing by 16 runs. 16 I think is a little bit more here. And Goa Police will be feeling very happy at the moment after having a good performance from all the bowlers, restricting a very good batting order of Om Warriors to just 47.
Sai Samarth won the toss and elected to bat first. सांग दे मॅचेची दिवशी हे सांग ना डिस्क्रिप्शन हे लीग का फायनल है जो भी दिए मी सांगू ये सोडियम पंचायत इंटर सोडियम पंचायत का लीग हुआ था उसका ये फाइनल इस मैच के बाद जो कि सोडियम पंचायत के लीग प्रीमियर लीग की प्रतियोगिता यहाँ पर हुई थी, उसका अंतिम मुकाबला उजवा क्रिकेटर्स और साई समर्थ के बीच में, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है साई समर्थ टीम ने। थैंक यू। पहले ओवर में निकले थे 10 रन पावर प्ले के, दूसरे ओवर में निकले 11 रन, पहले ओवर में भी निकले थे 2 विकेट और इस ओवर में भी निकले 2 विकेट। गोवा पुलिस की परिस्थिति अगर बताई जाए 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये शुरुआत। अभी भी न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए प्रवीण राणे, ये हार्ड हिटर बल्लेबाज। अविनाश गांव जो प्रारंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान में दाखिल थे, वो अभी भी 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके बल्ले से एक छक्का एक चौका देखने को मिला है और गेंदबाजी के मोर्चे पर सर्वेश गेंदबाज आपको नजर आएंगे। खुद के कोटे का पहला टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आप इस मैदान पर देख रहे हैं। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत देर के बाद निकला ये चौका और चौके के साथ टोटल पहुंचा है 25 रन पर 25। और ये देखिए पैडल सिर्फ खेलने की कोशिश, थोड़े से पहले झुके थे डीप स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी तेजी के साथ आता हुआ सिंगल को डबल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखा जैसे खिलाड़ी तेजी से आ रहे हैं, सिंगल के ऊपर ही संतुष्ट होना मुनासिब समझा। एक और सिंगल और एक सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर का मुकाबला यानी कि 2-2 इनिंग की ये सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में देखना है कितना टोटल यहाँ पर पार करते गोवा पुलिस, कितने रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखेगी। ये सूरत हाल इस मुकाबले का, क्या इस मुकाबले में वापसी करेगी ओम वॉरियर्स की। वैसे तो 4 विकेट चटकाने के बाद थोड़ी सी वापसी कर चुकी है टीम। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। दूसरी इनिंग में कितने रन बनेंगे, अगर 60 का आंकड़ा यहाँ पर पार कर लेते गोवा पुलिस की टीम तो शायद एक मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि युवराज गौरेश जैसे बल्लेबाज मौजूद है ओम वॉरियर्स के खेमे में, और यहीं से और इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी शेष रहेगा। फिर एक बार यहाँ पर ब्लाइंड स्ट्रोक, कहीं पर गेंद कहीं पर बल्ला, कोई रन नहीं, डॉट गेंदे निकली 2 लगातार। और गेंदबाजी की बात की जाए तो अलग तरह की गेंदबाजी, मिश्रण गेंदबाजी करते हैं, गति परिवर्तन बीच बीच में यहाँ पर करते हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक की बात की जाए तो सर्वेश की। फुल टॉस गेंद, इस बार तगड़ा स्ट्रोक, लेकिन सीधा खिलाड़ी को ढूंढ लिया वहां पर और एक विकेट। आधी टीम अब वापसी करते हुए प्रवीण राणे भी आउट होकर बैल में वापस, 5वां विकेट। एक सिरे से अविनाश जौहर पर डब्ल्यू आउट होने वाले अपने सहकारी को देख रहा है। थैंक यू। न्यू बैटर हर्षद मातोंडकर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी केन के नाम से जाना जाता है, ये खिलाड़ी मैदान पर दाखिल हो चुका है। 5 विकेट यानी कि आधी टीम वापसी कर चुकी है। पूरी तरह से गेंदबाजी की अगर बात की जाए ना, पहले इनिंग से
पहले इनिंग से अच्छी गेंदबाजी अब कर रही ओम वॉरियर्स की टीम। पहले इनिंग में बहुत सारे रन खर्च करे थे और अब यहाँ पर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वेश। फिर एक बार सामना करेंगे केन और रिवर्स टाइम अल्टे अल्टे स्विच आते आते एक स्विच हिट, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, कवर पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। थैंक यू। गोवा पुलिस की अगर बात की जाए तो अब तक 3 ओवरों का खेल समाप्त, इस ओवर में भी निकले हैं 11 रन 1 विकेट और टोटल जो है 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 रन बनाकर पुनाजी कलंगुटकर आउट हो गए, 4 रन बनाकर यहाँ पर समर्थ गांव से आउट हो गए। उसके बाद तीनों बल्लेबाज खाता खोलने से पहले वापस खेमे में लौट चुके हैं और हर्षद मातोंडकर ने आते आते एक रिवर्स हिट लगाई और जिसके ऊपर 6 रन अर्जित करे, जिसके चलते हुए 32 रन। अब टोटल की अगर बात की जाए ना तो वो 16 रन की बढ़त है, वो काफी चुभेगी क्योंकि ये 32 रन और उसके आगे चलेंगे टोटल और उसके उसमें ऐड हो जाएगा वो 16 रन का जो कि लीडिंग। ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त एक सिंगल और खाते में जुड़ता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 33 रन। गौरीश है गेंदबाजी के मोर्चे पर, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। स्लोवर वन हवा में खेल बैठे, शायद गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, डब्ल्यू के बल्ले से निकलता हुआ ताकत भरा और एक छक्का। ये छक्का निकला और टोटल जो कि यहां पर पहुंचा 38 रन पर, 39 रन पर पहुंचा है टोटल। फुल टॉस गेंद फिर एक बार खेल दिया, इस बार लॉन्ग ऑफ कवर पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते मात्र मिलेगा सिंगल। 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। गोवा पुलिस की अगर बात की जाए तो निचले क्रम तक बल्लेबाजी है, उनके हर एक खिलाड़ी बल्लेबाजी करना जानता है। ओ ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। शायद इस मैच का सूरत हाल देखिए, गेंद रन पहुंचा है 40 पर, 16 रन अभी भी उसमें इंक्लूड होने बाकी है, लेकिन उससे पहले ये गेंदबाजी यहां पर देखनी होगी। फिर एक बार यहां पर डाली ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा दोबारा डालनी पड़ेगी। ये गेंद बहुत ही शानदार यहां पर टोटल की अगर बात की जाए, बल्लेबाजी थोड़ी सी मैं कहूंगा 5 विकेट जल्दी गिरे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है रन के ऊपर, रन बनते चले जा रहे हैं। ओ इस बार देखिए ये बड़ा हिट, मैसिव हिट, गेंद मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ टोटल मतलब आगे बढ़ता हुआ 47। केन के बल्ले से निकला एक और बड़ा शॉट। ओ इस बार देखिए हवाई फायर, जाइए जाइए, दर्शक बने रहे खिलाड़ी, और एक मैसिव हिट और एक छक्का और इसी के साथ गोवा पुलिस टीम के 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा है 53 रन पर, 53। अब मात्र टोटल बड़ा हो रहा है क्योंकि इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल और बाकी है। ओ ये देखिए आगे डाले थे, कैसा शॉट है, एक अलग तरह का स्ट्रोक, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, साथ साथ ओवर समाप्त हुआ। ये चौथा 4 ओवरों का खेल समाप्त, 59 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, यानी कि वो 16 रन उसमें इंक्लूड की जाए तो 75 अब तक टोटल बन चुका है। देखिए मैच में उल्टा फेर कैसा होता है,
पहली इनिंग जब गेंदबाजी करी थी ओम वॉरियर्स ने पहले 3 ओवर महंगे साबित हुए थे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी पहले 3 ओवर अच्छे डाले गए और चौथे ओवर में यहाँ पर मारा कम और घसीटा ज्यादा वाली बल्लेबाजी देखने को मिली। 59 पर यहाँ पर निकला है टोटल और इंक्लूडिंग 16 रन, यानी कि टोटल पहुंचा 75 पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और गेंदबाजी के मोर्चे पर नारायण सामना करेंगे अविनाश उर्फ डब्ल्यू। एक चोर संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए मैदान पर। ओ आधे पिच के ऊपर ये गेंद थी, ये दावत थी शेर के लिए। गेंद को तो भेजना था नजदीकी प्लॉट में 6 रन के लिए। थैंक यू। गोवा राज्य के फिरकी गेंदबाज, जादूमई गेंदबाज के नाम से जाने जाने वाले मैन फ्रॉम नावेली गोपाल गांव के ये बंधु है, भाऊ भैया है ये, जो कि नारायण गांव। लेकिन ये आधे पिच के ऊपर थी गेंद, एक तगड़ा स्ट्रोक। आमने सामने दोनों खिलाड़ी नावेली से बिलोंग करने वाले। शॉर्ट गेंद, ये फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक मैसिव 6 अविनाश उर्फ डब्ल्यू के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल अब पहुंचा टोटल पहुंचा है 71, 71 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 बड़े शॉट यहां पर निकल आए अविनाश उर्फ डब्ल्यू के बल्ले से। क्या शानदार बल्लेबाजी मैदान पर अपने टीम के लिए, एक बड़ा टोटल, विशाल टोटल। और ये देखिए यहाँ पर अपील जोरदार कर रहे हैं। बल्ला दिखाया था जरूर अंपायर के पास, लेग बाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ। 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 72 रन 72। आखिरी 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और सामना करेंगे हर्षद मातोंडकर स्ट्राइक पर। क्या मैच का सूरत हाल देखिए, बहुत बड़ा टोटल बन चुका है। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाए। फील्डर का अच्छा कैच, गेंद को चलता कर दिया, लेकिन कहना पड़ रहा है बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। टोटल तो कब का बन चुका है, एक बड़ा विशाल टोटल। न्यू बैटर मैदान पर आपली कलंगुटकर। शानदार बारी यहाँ पर खेली केन ने। हर्षद मातोंडकर ने अपने टीम के लिए यहाँ पर 3 बड़े हिट लगाए, 18 रनों का योगदान दिया। और अब आया आपली कलंगुटकर। 2 गेंदों का खेल अभी भी इस इनिंग का बाकी है। इस ओवर में 2 बड़े शॉट निकल चुके हैं। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक बल्ले को जरूर लगी थी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। जहां पर खिलाड़ी तैनात वहां पर गेंद निकले। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल 73, 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की और सामना करेंगे अविनाश उर्फ डब्ल्यू। 4 छक्के अविनाश के बल्ले से, 2 चौके अब तक निकल चुके हैं। ओ इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, आई नहीं गेंद, चढ़ी नहीं बल्ले पर। सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ साथ 74 रन और उसमें जमा हो जाएंगे और 16, यानी कि कुल बने हैं 90 रन। और जीतने के लिए 91 रनों का लक्ष्य है 10 ओवर में। यहाँ पर निश्चित रूप से देखने वाली तो बात दोनों टीमों के लिए इस मैदान पर अगर अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनती है पहली 2 विकेट के लिए ओम वॉरियर्स को, तो निश्चित रूप से यहां पर वापसी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से देखी जाए गेंदबाजी अच्छी है गोवा पुलिस टीम की। अगर शायद वहां पर अच्छी गेंदबाजी करे तो मैं कहूंगा
जीतने के और आसार बढ़ जाएंगे गोवा पुलिस टीम के। लेकिन क्या होगा क्रिकेट में ये कोई कह नहीं सकता। अनिश्चितता भरी है क्रिकेट में। काल काल के आगे भी चलता हुआ जिसका नाम है क्रिकेट, और इसलिए तो इसके ऊपर भाकित करना गलत माना जाता है। क्या होगा दूसरी इनिंग में, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव पर आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अंग्रेजी में विवरण देने के लिए हरीश काकोडकर सर, धन्यवाद। तशेंच फुडली जी मॅच जातली, जी फायनल जातली यो ऑल इंडिया लेवल टुर्नामेंट न्ही जाल्यार वर्ल्ड वायड टुर्नामेंट, साई समर्थ आनी आजोबा तुमकां कळयल्लें वता की जशी ही इनिंग्स काबार जाता इमिजिएटली जाणें कोणें फिल्डिंग घेतल्या ताणें ग्रावंडार फिल्डिंगेक देंवचें, तशेंच बॅटिंग कोणाक पडलें ताणें ओपनर्स बॅटिंगेक धाडचें, कारण ना जाल्यार आमकां जो फायनल आसतली थंय आमकां टायम कमी मेळटलो. तुमकां रिक्वेस्ट आसा 5-5 ओव्हरीची म्हणल्यार 4 जर गेमी धरल्यो जाल्यार 80 ओव्हरीक दिसाक जाता. सो ह्या 80 ओव्हरीचें जर कॅल्क्युलेशन धरलें जाल्यार टायम खंय तरी तुमी फास्ट करपाक जाय. सो रिक्वेस्ट करता येदे व्हडले जो टुर्नामेंट दबाजाचो गडगंज असो टुर्नामेंट तुमच्या खातीर केल्लो आसा, तसोच लोकल टुर्नामेंट जालो ताची आज सांगता जाता, आज फायनल जाता. त्या लोकल प्लेयर्सांकूय हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशे तितलेच प्रोफेशनली जशी मॅच काबार जाता तशेंच इमिजिएटली ग्रावंडार देंवचें. So lead of 16 runs in the first innings and a total of 74. So 90 is what Goa Police have managed to get in their 2 innings, and 91 is runs are required. 91 is a bit too much, asking too much here. The only person that they can win is Yuvraj. They need a big innings from Yuvraj. If Yuvraj can play maybe somewhere around 50-50 plus and other batters chip in around with 15-10, 15-10, then maybe the total of 91 is possible. Nothing is impossible in the game of cricket. Believe in yourself and you can conquer the world. Starts off here with a wide. So Apali Kalangudkar, it was a mix over, that first one that he bowled 3 full toss balls. He was not on the mark. Normally Apali Kalangudkar, which is highly rated in Goa, I think he bowls pretty decently. He picks up wickets on a regular basis, bowls those cutters consistently well. Look at this team, Goa Police. They have such a strength in all departments. We felt that 5 wickets are going down, that they will be reeling in that match. But having said that, they're all
11 players can bat, all 11 players can bowl. That's the strength of this team, Goa Police. At number 8 was Apali Kalangutkar. You can imagine, very well bowled here from Apali. You can imagine Sandesh Thakur not getting a batting here in this batting lineup. You can imagine how much is the strength of this batting order of Goa Police. One of the strongest outfits in Goa. So this is smart bowling here, very smart bowling. He exactly knows what Yuvraj is trying to do, and he just have to keep Yuvraj quiet here, and he has kept him quiet with 4 dot balls. No connection whatsoever. Apali Kalangutkar, this is the best of Apali Kalangutkar we are watching. This time just played in the gaps. Surya comes quickly. It was always a difficult ask here for the batters against the top players. It likes diamonds have been selected across Goan formats. These players play in as icon players in the franchisee tournament across Goa. All have been selected to play for one team. This is in the air. Surya, the ball just lands there in that hard area and just goes softly into the hands of Surya. So just considering 3 runs in this over after completion of 1, and target is 91. So 88 runs required in 24 balls. Well, if anyone has understood the outcome of this game is the DJ of this tournament. So he very well knows where the match is heading. So he is heading into his dreams. He has already headed into his dreams, and he is thinking about the next tournament, how he is going to play the music. It's not bad to dream during the daylight. You get better dreams during the daylight than during the night. So you can understand when the music is off, DJ is also off. In comes Sandesh Thakur. This is in the air. Has he timed it well? Sanjay Naik stays calm. Very nicely taken in the deep. It was not easy. He had to see whether his foot was close to the rope. He saw it in the first instance and then gauged the ball. So a big wicket. Viraj goes back in the pavilion. Yes, and when the music is off, the commentators have to do a little bit more hard work. Especially in a semi-finals like this, which is going and turning to be one-sided one. It's all Goa Police at the moment. Well, home warriors you cannot blame. They were up against the strongest side of this tournament. Look at this strength. One after the other. It's like you are watching the IPL and one of the superstars of each team have combined to form one team. This is in the air. This might be a catch. Baba Murray goes for the catch and takes it easily. So it's all a one-sided affair, and finally the DJ has woken up. Yeah, it's the time right now that everyone is feeling hungry. Goa Police is hungry for the victory. Umpires will be after this innings will be hungry for a little bit of lunch. I am also waiting for my lunch. So this is at odd time here, 1:30 to 2. Well, the players don't have the options. Players have to play 4 innings, and players have to be on the mark. In a big tournament like this, they have to be on the toes. They have to concentrate and be in the focus of the game. Cannot be out focus.
On a hat-trick here, Sandesh Thakur. One more time in his career. This time he has timed it well. Might be a catch. No, it's 6 runs. 6 runs it is coming from the bat of Gaudesh. This is way outside and wide signal here. Umpire raising both the arms for their signal. They have placed a man in the sleep. Samarth Gauns. This time he left it, hoping that it will be a wide. But no, says umpire. Hard to tell from here in the commentary box whether the batter has shuffled or not. So umpire looks to be in the right position. Going for the switch hit. Very nicely kept here. Wonderful keeping from Baba Malik throughout the course of these semi-finals for Goa Police. 1 over. Only a 6 here against Sandesh Thakur. At the end of 2 is 10 for 2. Well, I always take the names of everyone. It has been a top-class umpiring in this tournament. Absolutely top-notch from all the umpires, not only Sujit Rane, Rajendra Bolkar, Abhijit Thalekar, but also Amin Naik was very good yesterday. That's the class we want to see in an all-India level tournament, that everyone should witness. Goa has talent in all departments. Goa Police is showing certainly as a team. This is in the air. What a shot this is. This is been smoked out of the meat of the bat. Just shuffle across, give it a full go and give it a full result. The final destination for any batter are the 6s, and they require many more of those. But I think Surya has been welcome with a 6 here from the bat of Yuvraj. He was quiet in the first over against Pali Kalangudkar. But certainly he is going to be a big name in the years to come as far as tennis cricket is concerned. This man, Yuvraj. There's the best switch hit, but he has timed it straight in the hands of the fielder. He wanted to go get it over the covers region fielder. Got it little straighter over the long off fielder. Takes catch easily. And the big man, the very good striker from Home Warriors, Pali, Yuvraj departs. Well, you can understand this match was turning into one-sided semi-finals. The first semi-finals was absolutely great to watch right till the end. It was a close finish line for both the teams. Just a fine difference for the victory laps. One more addition, one more feather in the cap of this Ujwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy organized by Sodium Stars. Drone. Oh, that's a good shot. Once again, will it be taken? No, dropped at the last moment. He was into the position. Maybe I feel sometimes we have seen good shots being played, which has been timed very well, powered very well by the batters. Sometimes it doesn't go as 6. Maybe the wind or maybe a little bit of less moisture content does not allow the ball to go for 6. This is once again nothing short here from Gaudesh. Absolutely nothing short. Just went high
and easily taken by Baba Malik. The wickets are falling faster than the sixes here at the moment for Om Warriors. Four wickets are down at the score of just 17. I was talking about one more addition, one more feather in the cap is the drone coverage. A drone is on the top and is covering the tournament live. So we'll get some wonderful feeds. And also, I was talking about the scorers, commentators. Scorer's name also has to be taken. He has been absolutely very, very good. Prasad Halankar in this tournament. All the way from Bitona Porvorim, Prasad Halankar, who is doing a fine job. And he's improving day by day. Life is a great learning experience, not only for the umpires, but also for commentators, players, and everyone. So Prasad will get better as far as the tournament is concerned, and maybe he will be definitely included in the big tournament that are being held maybe this season or the next season. So wishing best of luck to Prasad as well. 3 overs gone, and he's 17 for 4. And the sound also, and along with the music, is provided by Anish Mainkar. In comes Arshad Mathonkar, going for the switch hit. Everyone is relaxed, especially Goa police and also the batters. They know the outcome of this match, so no fight absolutely whatsoever. This has been well won here. The battle has been well won, and the war will begin after another 1.5 hours. Once again, this will be just the catching practice here, and catch taken in the deep. So wickets are coming, wickets are walking back in the pavilion, and just some moments left to be bowled in this match. Arshad Mathonkar also comes into the wickets column. Anish Mainkar there, youngster, doing his business of providing the sound and also some wonderful music. So youngster should be promoted. Youngster is given opportunity here by Mohit Chopdekar. It's nice to see that everyone. This might be no appeal there from the bowler and also from the keeper. A sleep is there in place. Goa police very well knows there's nothing left in this match. Not even the tail. Just swinging here, swinging widely, and he's going back. He's not even waiting for the umpire's decision here. The batsman just comes, and it's just a walking procession of Om Warriors at the moment. The finals will be really a good one here.
This is in the air. This might be one more catching practice. No, goes for 4 runs. Hit it straight, much straighter than even the fielder at long of thought. So boundary for the batter. Finally, the over concludes. 4 overs gone. Is 21 for 6. And the match has been well won before the 5th over itself. So I think they are just going to try here, maybe, or maybe not trying any bowlers for an opportunity in the finals. It's going to be 8 strikers versus Goa Police. So now Punaji Kalangudkar feels that I have also got an opportunity. Why should other boys have all the fun? I should also get wickets here. 2 wickets for Sandesh Thakur, 2 wickets for Surya, 2 wickets for Harshad Matondkar. Can Punaji Kalangudkar pick up 2 wickets here? Well, Punaji many times bowls for Team Asnora during the Panchayat and Municipality tournament. It's not like he is just going to be an easy goer here for the batsman. He bowls pretty decent leg spinners. Punaji, if no one has watched him, he definitely bowls well. Sometimes he even wins matches by bowling those 1 over for his team, Team Asnora. This is in the air. This might be catch straight in the hands. And catch dropped here. Too easy. Too complacent here. Very complacent W. First he thought it might go for 6 runs. Then he felt that he is in the race. Punaji will feel unlucky. Coming down the track, and that's the first wicket here. Oh, they are not giving wicket here to Punaji Kalangudkar. Team is saying, no, we cannot give wicket to you at the moment. Once again a chance. This time W takes it. He dropped the first catch. Punaji Kalangudkar finally catch has been taken by W here, and he gets the wicket. The live coverage going on 70, more than 25,000 viewers have seen this big tournament in the last 3 days, and definitely there will be more viewers that are going to join to watch the finals that will be played from a team from Maharashtra. Most of the players from Maharashtra, rather. 8 strikers versus Goa Police, and that's going to be the end of it. End of this match. End of misery here for Om Warriors. It has been a clinical performance right in all the departments here. Goa Police, they were strong on paper and strong on ground. So they storm themselves with easy win over Om Warriors in the semi-finals. It will be 8 strikers versus Goa Police later on. But before that, the finals of Azoba Cricketers versus